अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड विद हुमैरा। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है। वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर क्रेडेंशलिंग, बिलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा हम न्यूज़ के हम बेहद शुक्रगुजार हैं टू प्रोवाइड अस विद दिस प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मिलाते हैं आपको हर दफ़ा एक स्पेशलिस्ट के साथ और उससे बहुत सारी मालूमात आपके लिए गैदर करते हैं। आज हमने इस प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। आप 2 एपिसोड्स देखेंगे जिसमें एक ही स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा और बारी बारी उनसे बहुत सारी ऐसी बातें आपके लिए शेयर की जाएंगी जो रोज़मर्रा में आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एजाज अहमद, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इनके बारे में ये आपको बताती चलूँ कि 30 साल से ज़्यादा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से मुंसलिक रह चुके हैं और सिंध मेडिकल कॉलेज के ये ग्रेजुएट हैं। इस वक्त ये बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनकी अपनी प्रैक्टिस है। अब इनसे ये पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में डिफरेंट हैं एक आम कार्डियोलॉजिस्ट से जो कि जनरल कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, और कौन सी डिजीज़ हैं जिसके ऊपर ये ख़ास तौर पे कमांड रखते हैं और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए आज के मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर एजाज, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच टू आस्क मी टू कम टू योर शो। थैंक यू। जी डॉक्टर एजाज, तो सबसे पहले तो हम वही जो मैं अपने नाज़रीन से बात करी थी कि हम ये जानना चाहेंगे कि एक जनरल कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जब हम कहते हैं तो क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि एक होता है सिर्फ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं आप, कोई भी हार्ट डिजीज़ की कोई जो हो वो आप डायग्नोज कर सकते हैं विद डिफरेंट टेस्ट और फिर देन यू कैन प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। बट व्हेन इट कम्स टू दैट स्टेज where it is not controlled by the medicines, then sometimes we have to do interventions. What does that mean is, let's just say we're talking about from the heart, that if someone has angina and it's gone to that extent that with medicine it is not controlling, so then at that time we need to go and do the cardiac catheterization to find it out where is the blockage, how much blockages are there, and depending on that, as a cardiologist, what we do is we put stents. And this is one thing that at that time the medicines basically do not help with that person who has such a severe coronary artery disease. Otherwise उनके chances जो हैं heart attack के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें without doing any bypass surgery, these days we mostly put stents and open up the vessels and to make sure that the blood is flowing properly. ये एक आम procedures है which we do. On top of that, what we do is, let's say someone has arrhythmias, like someone has low heart rate, and they are having cardiac arrhythmias also. So in that case, what we do is we put a pacemakers also, so that regulate the heart and make sure that the heart rate doesn't drop too low. Then on top of that, what we do is, let's say someone has a very high blood pressure, and we call them secondary hypertension, mean के एक आम blood pressure नहीं है। आप 3 मेडिसिन ज़्यादा करते हैं जब यूज़ करते हैं और फिर भी ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, तो उस केस में हम एक मेडिकल टेस्ट करके पता करते हैं कि क्या किसी आदमी को कोई रीनल आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है, यानी कि जो आर्टरीज़ होती हैं जो किडनी को जाती हैं, बाज़ बार उनके अंदर ब्लॉकेज होती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हम अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं, कैट स्कैन से भी पता कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी हम कैथेटर डाल के और इधर पुट अ balloon or the stent, we can open up that. That's the second thing. The third thing what we normally do is कि जिन लोगों को particularly peripheral vascular disease होती है, जैसे iliac artery की और femoral artery की और नीचे below the knee जो anterior tibial और posterior tibial और peroneal की होती है, तो फिर हम पहले टेस्ट करते हैं। जैसे एक आम कार्डियोलॉजिस्ट they can do the test, but after that majority of the time they just give some medicine to help some extent to that. But when the disease goes come back to that stage, which is not controlled by the medicine, then that is a time that we need to do intervention. तीन चीज़ के अलावा एक और चीज़ जो है बहुत ही important है, वो ये है कि जो आदमी जिसको हार्ट अटैक होता है
उसमें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उस वक्त आप उसको कहें जी ये ले लो और आप एक ज़माना था इन द 1960 ख़ासकर पाकिस्तान में और इवन अमेरिका में भी कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता था तो बेड रेस्ट होता था. अब ये है कि विद इन द मोमेंट व्हेन दे हैव अ हार्ट अटैक ऑफ कोर्स दे गो टू द इमरजेंसी रूम. At that time, they do not call the regular cardiologist. They call the intervention cardiologist. वो हम EKG हमें भेजते हैं on our fax machine. Then we look at it and say that someone is having a heart attack. At that time, within 90 minutes, we have to go to the hospital, take the patient and take the patient to the cath lab और immediately करके उसमें पता लगता है कि भाई एक आर्टरी जो है completely blocked. So that's like in the ER जब जाता है कोई. Absolutely. जी हाँ, तो वो ER के. अच्छा, अब ये है कि उसके अगर आप आर्टरी जो बंद रखें और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है. हाँ, एक थ्रोम्बोलिटिक होती है, पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन उसका एक ख़तरा होता है कि बाज़ पर्सन कैन ब्लीड इन द ब्रेन ऑल्सो. सो एनीवे, राइट नाउ व्हाट वी डू इज़ वी टेक द पेशेंट टू द कैथ लैब और देखते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है. ऑन डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉकेज एट द सेम टाइम it's a very soft plaque. We open up the artery, resume the flow. क्योंकि when there is a damage to the muscles of the heart, once that is within 3 hours, it's supposed to be a complete damage. After that, even if you put a stent, majority of the heart does not come back. So within that time, we have to open up, so we can reduce the further damage to the heart and try to improve the cells which most probably are going to die. So उस चीज़ में सबसे ज़्यादा important ये होती है कि डैमेज ना हो हार्ट को. अगर डैमेज हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि दैट हार्ट इज़ बेसिकली नो गुड. कार्डियक सर्जन जो है वो बेसिकली वो चीज़ें जो हम नहीं कर सकते. फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी, जैसे हम कहते हैं एक लेफ़्ट मेन होती है और उसके ऊपर 2 ब्रांचेस होती हैं जैसे LAD और सर्कमफ्लेक्स. अगर किसी आदमी को ब्लॉकेज जो है वो मेन लाइन, उसको लेफ़्ट मेन कहते हैं, वहाँ पे हो, तो या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हम उसके अंदर जो है वायर और स्टेंट नहीं डाल सकते, ऐसी लोकेशन होती हैं, को उस केस में यह है कि मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती हैं. तो हम ये समझते हैं कि इस पेशेंट के लिए बेहतर है कि वो आदमी जो है वो पेशेंट को वी सेंड देम टू द सर्जन और वो फिर दे ओपन अप द चेस्ट, दे गो, यस, उसको ओपन हार्ट केस, और वो दे टेक द वेन्स, इधर मेमोरी लेते हैं जो हार्ट की होती हैं, जो सीने में होती हैं, और दे टेक द वेन्स फ्रॉम द लेग. तो वो फिर उसको एक किस्म की ग्राफ्ट कर देता है और दे बाईपास दोज ब्लॉकेजेस विच आर ऑलरेडी देयर, दे डू नॉट डू एनीथिंग. तो एक एक्स्ट्रा पैथवे बना देते हैं सो द ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम द एओर्टा डाउन टू द मसल्स ऑफ द हार्ट थ्रू दोज ब्रांच. तो वो बाईपास वाला जो है वो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी डू when we cannot perform. So एक होता है regular cardiologist, एक interventional cardiologist, and when that person fails, then we ask the surgeons to go and open up the heart. Okay, good to know. कि ये 3 नाज़रीन 3 जो हैं बेसिकली चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि आपको किस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट को इस वक्त फौरी तौर पे कांटेक्ट करना चाहिए. तो उसमें यह है कि जैसे स्ट्रोक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या वो भी एक हार्ट रिलेटेड चीज़ है, उसको भी फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए उस सिलसिले में? ये लोग अक्सर ये समझते नहीं हैं, वो समझते हैं स्ट्रोक इज़ टोटली डिफरेंट एनिमल. लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्ट्रोक होता है, जैसे स्ट्रोक का मतलब है कि इज़ अ डैमेज टू द ब्रेन, उसको स्ट्रोक कहते हैं. जैसे डैमेज टू द हार्ट उसको हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं और स्ट्रोक. लेकिन जो स्ट्रोक है अगर आप इसको देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड से मोर देन 90% इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट. उसकी सबसे बड़ी 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं जब डैमेज होता है टू द ब्रेन. वन इज़ व्हेन यू ब्लीड इन द ब्रेन. सो and most probably what happens that there's an aneurysm in the artery of the brain, and that most probably happens when you have a very high blood pressure. When you have a very high blood pressure, and particularly when you do not control it, तो वो blood vessel जो है there is a chance of rupture. तो ज़ाहिर rupture हो गया तो इसका मतलब कि there is a blood in the brain. So majority of those patients basically do not survive because there is so much blood. So majority of patients they die. But anyway,
The other when there is a chance of a stroke in the brain is when you have a blood clot going to the brain. Majority of the time it is the blood clot which goes from the heart to the brain. کہ بعض آپ کہتے ہیں کہ بھئی ینگ لوگوں کو کیسے سٹروک ہو گیا. جی جی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سنڈروم ہے جس کو کہتے ہیں ٹاکاسوبو سنڈروم, یعنی کہ وہ جاپان میں جو ہوا, لیکن یہ ینگ لوگوں کو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو بڑے لور ہوتے ہیں, اگر وہ اس کی ڈسوسیشن ہو جائے ود دا بوائے اور دا گرل, تو وہ ایک ایسا ان کے اندر غم کی جو کیفیت ہوتی ہے, تو جو ہارٹ ہے وہ اس کا جو نیچے والا جو ایریا ہے جس کو ہم ایپیکل کرتے ہیں وہ پراپرلی پمپ نہیں کرتا, تو جو پمپ نہیں کرتا تو ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ بلڈ کلاٹ کین اسٹک دیئر, اور پھر وہاں سے یہ بھی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ہمیں تھوڑی سی ایک شارٹ بریک لینی پڑے گی فار آور اسپانسر, تو وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. You don't have health insurance? Call us. We can enroll you today. Most families can get health plans for under $100 a month. Many low-income families pay zero premium. Call Mumtaz Zaman, top-ranked agent in health insurance, serving in 50 states across USA. We can enroll employers groups of 50 to 5,000 employees in top insurance companies. Call Zaman Insurance Agency. Call Mumtaz Zaman. Call us today. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. آپ کی زکوٰۃ صرف ایک عطیہ نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سرمایہ ہے. آپ کی زکوٰۃ ایک بچے کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے سماجی ترقی کا باعث بن سکتی ہے. اپنی زکوٰۃ تعمیر ملت فاؤنڈیشن کو دیں اور ایک بچے کو دنیا بدلنے کی طاقت دیں. ناظرین ویلکم بیک. دوبارہ سے ہم ڈاکٹر اعجاز سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر اعجاز, ایک تو یہ آپ دوبارہ سے بتا رہے تھے کہ وہ جو دل کی لگی ہوتی ہے وہ کیسے دل پہ اثر کرتی ہے, تو پلیز یہ دوبارہ سے بتائیے. یہ تو ہے. میں ایک اور بھی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ جو irregular بیٹ ہوتی ہے, بعض لوگوں کو ریگولر ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو انٹرمیٹنٹ ہوتا ہے, یعنی آیا اور چلا گیا. وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے کہ اس کے دوران بھی بلڈ کلاٹ کین فارم, اور اس کے لیے ہم مانیٹر لگاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اگر پیشنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے ہارٹ ریٹ تیز ہو گیا ہے یا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے, تو ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی آدمی کو ایٹریل فبریلیشن یا ایٹریل فلٹر ہے, تو ہم ان کو بلڈ تھنر کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ ان کا بلڈ کلاٹ جو ہے جو وہ اپر چیمبر میں نہ بن سکے. نہیں, یہ جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ بعض اوقات اس حد تک جو ہے کسی کا لو افیئر جو ہے اور اس کا اتنا افیکٹ ہوا ہے کہ ہارٹ جو ہے افیکٹڈ ہو گیا, وہ پلیز دوبارہ سے ایکسپلین کریں. اصل میں یہ ہے کہ اس کو آپ ایک کہتے ہیں جیسے ایک سٹننگ موڈ میں, جیسے کسی کو آپ ایک ایسی نیوز دیتے ہیں تو ایک طرح کا وہ ہارٹ پرسن جو ہے وہ سٹن کر جاتا ہے. تو ہارٹ میں یہ ہے کہ یہ جاپان میں سب سے پہلے انہوں نے پتہ کیا تھا کہ بعض ینگ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے, ان کے اندر جب انہوں نے آرٹریز چیک کی تو وہ نارمل تھیں, تو انہوں نے جب دیکھا کہ کیا, جب انہوں نے ایکو کارڈیوگرام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو ایپیکس آف دی ہارٹ ہے وہ بیسیکلی انلارج ہو گیا ہے اور وہ پورا پمپ نہیں کر رہا. اچھا, تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم ٹاکاسوبو سنڈروم کہتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں
ख़ास कर उन लोगों में जो बहुत सेंसिटिव हैं और ज़रूरी नहीं है कि लव अफेयर ही जो है वो और चीज़ों में भी अगर यंग एज में कोई, लेकिन अक्सर हम ओल्ड एज में नहीं देखते, तो ये हम यंग लोगों में देखते हैं कि ये सिर्फ में, और हम बाकायदा एको करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं। जो मूवीज़ में दिखाते थे पुराना मोहम्मद अली या कुछ कि एकदम दिल पे हाथ रखे गिर गए हैं, कोई खबर आई है, तो दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। हाँ, एक लिहाज से, लेकिन मोहम्मद अली को तो इतने हार्ट अटैक हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो हमेशा मैंने देखा कभी BA से ऊपर नहीं गए। अगर कोई ऑलरेडी किसी का वीक हार्ट है या कुछ और उसको एकदम से सडन कोई न्यूज़ ऐसी मिलती है तो दे कैन बी इफेक्ट। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो आपने स्ट्रेस वगैरह का कहा, उससे क्या होता है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो इनटू सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, there's some release of epinephrine from the brain. So when you release that, what happens is that it affects the heart also, and it start pumping fast. Then on fast, the speed of blood flow की वो भी basically तेज होती है. When people have, and this is very interesting that everybody should know, कि जो blockages होती है ना हार्ट की, वो ये नहीं होता कि 50%, 60%, 70, 80, 90, अगर आप किसको पूछें कि किसी को 90% ब्लॉकेज है तो उसके चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा हैं या 50% के ज़्यादा हैं? तो ज़ाहिर है कहेगा 90%, नहीं, 50% के ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जब ब्रेन से जो सब्सटेंस निकलते हैं, तो जो स्पीड जो है वो उसको बेसिकली उसके जो प्लैक होते हैं वो दे बेसिकली क्रैश ऑन दैट, और देयर इज़ अ रप्चर ऑफ द प्लैक. Whenever there is a rupture of the plaque, immediately a person goes into a heart attack. So there is a clot formation within that lumen or the artery of that there is a release, and all the substances comes into the blood, and immediately the blood clot is formed. So a lot of people say I was all right, कल देखा वो ठीक था, दोपहर पे ठीक था, एकदम क्या हुआ? तो बाज़ दफ़ा ये बात सही है, मूवी में दिखाते हैं कि किसी को इसी तरह हुआ, और उसकी वजह से प्लैक तो होते हैं, लेकिन दे आर मीडियम ग्रेड प्लैक्स. ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि प्लैक होता क्या है? ये जो आर्टरीज में हमारे बन जाता है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कोलेस्ट्रॉल लेवल. सो जैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, ज़ाहिर है अब वो कहते हैं कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं. तो जो रिस्क फैक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो इज़ नंबर 1 इज़ द कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल. प्लैक अगर किसी को हो जाता है तो इज़ इट रिवर्सिबल? To some extent, what we do is basically the medicine for cholesterol, like we use statin, which are very powerful also. ये दो चीज़ें करती हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती हैं, और दूसरा दे स्टेबलाइज, कि यानी कि जो वॉल है फॉर द एंडोथेलियम की जो वॉल है उसको स्टेबलाइज करते हैं, to make sure that the maximum the chances of rupture has gone down. तो ये जो रेगुलर कार्डिक चेकअप्स होते हैं, ये किस एज से मस्ट हैं? इसमें तो ये है कि at the age of 20 or even before that coronary artery disease started developing. But down the road उसका ज़ाहिर है माइल्ड प्लैक होते हैं तो वो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब हम कैरोटिड आर्टरी जैसे हम चेक करते हैं, और चूँकि in this portion जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हम उसको चेक कर सकते हैं, तो वी कैन सी द प्लैक ऑन दैट, कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वी कैन डू इट एंड सी व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ प्लैक इन द कैरोटिड आर्टरी. सो इसीलिए हम उसको भी डायग्नोज करते हैं कि व्हेन इट इज़ सिग्निफिकेंट वी ऑलवेज डू अ कैट स्कैन, मेक श्योर इट इज़ सिग्निफिकेंट, एंड देन वी हैव टू particularly stent or the surgery. मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि you are a big advocate and someone who assist with avoiding amputation of legs, के जो legs काटनी पड़ जाती हैं poor circulation की वजह से, तो उसके बारे में कुछ बताइए. ये है कि ये जो amputation है majority of the time अगर कोई एक्सीडेंट हो वो तो अलग बात है, लेकिन जब when we have a poor circulation तो वो अगर आप बिल्कुल एंड स्टेज में चले जाते हैं तो उसमें भी ये होता है कि चूँकि सर्कुलेशन नहीं होती, तो अगर आपका कोई वुंड हो इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग, दैट डज नॉट हील. सो ज़ाहिर है वुंड हीलिंग के लिए डायबिटीज़ का भी ताल्लुक है इससे. डेफिनेटली
تو جب وونڈ ہیلنگ میں اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے بلڈ فلو, بٹ وین دا بلڈ فلو از ڈمینش, سو دین دس ارسل ڈز ناٹ از کیورڈ. تو اس کے لیے آپ کوئی جو بھی اینٹی بائیوٹک دے تو وہ کام نہیں کرتی. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ بلڈ فلو. تو بعض وہ اس اسٹیج میں چلا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کٹ دا لیگ ٹو سیو دا پرسن. لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ کسی انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں, دس از واٹ وی ڈو. وی امیڈیٹلی فرسٹ آف آل وی ڈو دی ABI ٹو سی دا بلڈ فلو, دین وی ڈو دی arterial Doppler test, and then we do the angiogram. And then we can, after the angiogram, we can find it out where is a blockage, how much is that, and then we immediately put a stent on the upper leg and down in the below the leg. We mostly put the balloons and open up, so at least the blood is resuming. So you mean to say کہ amputation کو avoid کیا جا سکتا ہے at some extent. لیکن اگر آپ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں, once the gangrene is developed, then of course there is difficult, then you have to amputate. But just before that, if you approach any physician, cardiologist who does intervention, they can save the leg also. ناظرین, تو اس وقت ہمیں کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں پتہ چلی. اس میں ایک یہ تھا کہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو, اور خاص طور پہ ہارٹ ہیلتھ میں اسموکنگ جو ہے وہ کیا رول کرتی ہے, آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں جو نا ہارٹ از دا کنگ آف دا باڈی ان دا سینس کہ اگر یہ افیکٹڈ ہو گیا ہے تو ایوری تھنگ از گیٹنگ افیکٹڈ. تو اس کی کیئر کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے کبھی بھی آپ کو اگر کسی انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے تو ڈاکٹر اعجاز یہ موجود ہیں. ہمارے ایلا بلیوارڈ کے اوپر ان کا کلینک ہے, اور گوگل بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں, اور ہم لوگوں سے بھی ہر طرح کی انفارمیشن ان کے کانٹیکٹ کے بارے میں لی جا سکتی ہے. تو ڈاکٹر اعجاز, آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارا ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہے, لیکن اسی لیے ہم ملٹیپل ایپیسوڈز کرنا چاہتے ہیں ہر اسپیشلٹی کے اوپر, تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری جو خاص کر جو ڈائٹ ہے, جو خاص کر ہمارے لوگ جو پاکستان سے ہیں, ان کی جو ڈائٹ ہے وہ اس اکارڈنگ وہ نہیں ہے جو کہ آپ کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ نہ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہ ڈائٹ پراپر کھاتے ہیں, پھر فیملی ہسٹری بھی بڑی ہوتی ہے. پھر دوسری چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ایشین ہوتے ہیں ان کی جو بلڈ ویسل کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو امیریکن. سو دے ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیلز دیٹ دے ہیو. بٹ ان دا بگننگ اف یو وانٹ ٹو واچ دس تھنگ, you need to go to any physician, make sure that your cholesterol profile is done, your BMI is done, and you are exercising. And please make sure that you visit your doctor, and make sure that once in a while if you have symptoms, you get it checked properly. اور موسٹ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اسٹمک میں درد ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, آپ اس کو پلیز اگنور نہ کریں. کسی آدمی کو وچ از مور دین 40 ایئرز آف ایج اور اس کو اسٹمک میں پرابلم ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ اس کو شارٹنیس آف بریتھ ہے, I am telling you majority of the time it ends up to be cardiac problems instead of stomach problem or pneumonia or anything else. So that is very important that when you walk you don't have to have typical chest pain, which is tightness, heaviness, pressure, and goes down into the left arm, and particularly with the exertion. Those are the typical symptoms. But when you have atypical symptoms, this is what I'm telling you, when you have a stomach pain and the shortness of breath, particularly when you walk, then you must address and go to your physician, and of course he will address you or direct you to any other physicians. بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. You don't have health insurance? Call us. We can enroll you today. Most families can get health plans for under $100 a month. Many low-income families pay zero premium. Call Mumtaz Zaman, top-ranked agent in health insurance, serving in 50 states across USA.
We can enroll employers groups of 50 to 5,000 employees in top insurance companies. Call Zaman Insurance Agency. Call Mumtaz Zaman. Call us today. Houston Institute of Global Health, offering training in high demand healthcare field. हमारे बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की जमानत. Affordable cost of financing options available. अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्स सिलेक्ट करें. Medical assistant and administration, EKG technician, phlebotomy and continuing education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. आपकी ज़कात सिर्फ एक अतिया नहीं है, ये हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरमाया है। आपकी ज़कात एक बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकती है और आने वाली नस्लों के लिए समाजी तरक्की का बाइस बन सकती है। अपनी ज़कात तामीर मिल्लत फाउंडेशन को दें और एक बच्चे को दुनिया बदलने की ताकत दें।